एक बार ही लगाओ। हरी भरी Anyway, धरती I'm just telling you. ओके आसमान रहे, विवेक शुरू। लहराता तिरंगा हमेशा चांद तारों के समान रहे। ए मेरे देश तू यूं ही आजाद रहे, तेरा ये अधिकार रहे, तेरे हर गणतंत्र पर ए हिंदुस्तान मेरे जैसे लाखों कुर्बान रहे, मेरे जैसे लाखों कुर्बान रहे। Greetings to all of you on the eve of 73rd Republic Day of the world's largest, most vibrant and dynamic democracy. In this pure land of ours, enriched by diversity, our national festivals are celebrated by one and all with great patriotic fervor. We celebrate the National Festival of Republic Day with zeal and express our values and high respect for the national flag and our faith in the Constitution. 72 years ago, on this very day, we, the people of India, adopted, enacted and gave ourselves a very unique Constitution. Its abiding adherence is meant not only for those who are mandated to govern, but for the people at large. Do you know, initially consisting of 397 articles and 12 schedules, the Indian Constitution has since had over 100 amendments and now has 448 articles in 25 parts and 12 schedules, making it the longest constitution in the world and fighting the world's largest democracy. A great change. Etched in our hearts, we value the core values of justice, liberty, equality and fraternity that outlines the preamble of our Constitution. Thomas Sowell has very well said, the Constitution cannot protect us unless we protect the Constitution. I, Ishani, And I, Pia, warmly welcome you all to our today's auspicious gathering on behalf of our entire Gyaananda school family. A highly warm welcome to our respectable chief guest, Dr. Kiran Bedi, our distinguished guest, Dr. Veena Kalra, our most revered Chairman Shri Ashok Gupta, CEO Mr. Nakul Gupta, our head of the school, Dr. Deepika Rathi, high-minded teachers, kind-hearted parents and dear shining fellows. Brimming with hope, let's make the celebrations buoyant and upbeat. Sheer depth of pride felt by every Indian as they look at their country's tri-colored flag unfurl is a sight to behold. Now, I would like everyone to stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल
सभी यहाँ इस पावन तिरंगे झंडे के नीचे भारतीय गणतंत्र दिवस का महोत्सव बनाने के लिए एकत्रित होंगे। ये केवल एक पर्व नहीं बल्कि हर भारतवासी के लिए गर्व और सम्मान की बात है। This is an occasion to reaffirm our commitment to unity in diversity, fraternity, and equality among all our citizens. All the world is a stage. Keeping these lines of William Shakespeare in mind, and without taking much of a time, let's start our event by a patriotic song presented by our students. So, put your hands together for this beautiful performance. भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक रहेंगे हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माँ, हमने तन मन जीवन तुझसे ही पाए हैं, तेरी धरती से जन्मे हैं, तेरे फल खाए हैं। हम पर तेरी ममता, तेरी करुणा के साए हैं। तेरी बाहों में है पले, माँ हम हैं तेरे लाडले। तेरी बाहों में है पले, माँ हम हैं तेरे लाडले। दीवारें हम बनेंगे माँ, तलवारें हम बनेंगे माँ। छूले तुझको है किस्मत, भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक रहेंगे हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमको प्यारा है तेरा हर जर्रा भारत माँ, हमको प्यारे हैं तेरे पर्वत जंगल नदियाँ। हमको प्यारे तेरे गाँव नगर, तेरे रास्ते गलियाँ। कोई दुश्मन कभी अगर भूले से दिखले इधर, कोई दुश्मन कभी अगर भूले से दिखले इधर। दीवारें हम बनेंगे माँ, तलवारें हम बनेंगे माँ। छूले तुझको है किस्मत, भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक रहेंगे हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। This was indeed an outstanding performance. Therefore, they need to be appreciated. So, a big round of applause for them. किसी भी देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार की मूल संरचना और इसके कार्य को निर्धारित करता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। इसमें भारत को एक गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश बनाने की राह तैयार की गई। तो आइए चलते हैं हम अपने अगले कार्यक्रम की ओर, जिसमें छात्र एक नाटक जिसका शीर्षक है डेमोक्रेसी का प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं। We the people, we the citizens are the most important pillars of a democratic country. The Indian Constitution, the longest written constitution of any sovereign nation, provides a comprehensive framework to guide and govern the country, keeping in view with its social, cultural and religious diversity. A distinctive document with many extraordinary features. The Indian Constitution, the longest written constitution of any sovereign nation in the world. The success of Indian Constitution for a country as diverse and as complex India is continues to intrigue, inspire and impress experts around the world. Today, the Constitution of India was made and we got independence in the true sense. Don't just celebrate the day, but also respect the day.
Happy Republic Day to all of you. Believe me, in today's era, as a democracy and a digital leader, India is ready to work with the rest of the world for our shared prosperity and security. Do you know we are turning the challenges of the past into an opportunity to take a leap into the future? India's democratic traditions are old, but its modern institutions are strong, and we have always believed in the world as one family. Democracy is supported as it promotes human rights, peace, security, and development. Even United Nations holds it high as its main core value. लाखों बलिदानों ने देश की आजादी के लिए खून बहाया है, तब जाकर कहीं हमने अपना गणतंत्र पाया है. What is democracy and why is it considered as the best form of democratic government? Of the people, by the people, and for the people, which means the power of the people. A way of governing that depends on the will of the people. But what are the measures that consolidate democracy? Reasons many. Let me explain. Freedom of opinion and expression. Respect for human rights and fundamental freedom. Holding of free and fair elections. Separation of powers. Independence of the judiciary. Transparency and accountability in public administration. Free and independent media. Let's understand how a strong democracy and discipline work better together. It is correct to say that democracy and discipline go hand in hand together. Without discipline, democracy becomes mobocracy. In a democracy, it does not mean that we have a license to do anything and everything. But some people misuse the liberty granted under a democratic government. It is wrong to misuse freedom in a democracy. In reality, indisciplined people neither deserve a democratic government nor can they make a success of it. Democracy grants every citizen certain rights, but these rights are only possible if we perform certain duties. You're right. In other words, we can say that for the enjoyment of rights, we all need to perform certain duties also. You're right, because without performing certain duties, no person can be granted any rights. Today in the world, we can see that there are so many nations, but they are only making progress because of their disciplined people. Japan and Germany, both today are highly advanced nations only because of their disciplined people. It is then right to say that if in a democracy discipline is lacking, it is sure to be doomed. Democracy is successful in those countries only where the people are disciplined. They uphold their culture and identity and respect their nation. This is the only way that we can make our country strong and prosperous. We all agree with your conclusion. India is a democratic country. With the sea change, it has redefined politics, economy, and society. It is reshaping international competition, leadership, and power. It is raising new questions on sovereignty, governance, ethics, law, rights, and even security. Remember, a country can only flourish if the citizens are responsible enough to build a strong and powerful nation. We all are responsible for the protection and development of our country. Together, we can empower nations and their people and prepare them for the opportunities of this century. We need to build a future that reflects on our democratic ideals and values. 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया. तब जाकर भारत को अपनी ताकत का एहसास हुआ. देश का संविधान 2 साल, 11 महीने और 18 दिन में तैयार किया गया था. ये कहना गलत नहीं होगा कि सही मायने में देश को आजादी 26 जनवरी को ही मिली थी, जिसके बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश भर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की. जय हिंद. That was a marvelous performance. So, a huge round of applause for them. Now, moving forward, we would like to call upon the stage the person who is an inspiration for most of us, the woman who is the secret success of our organization,
a lady with a huge heart, to say a few words on this special occasion. Our Honorable Head of the School, Dr. Deepika Rathi, to welcome our Chief Guest of the Day and Chairman of the organization. Over to you, ma'am. Our Honorable Chief Guest of the Day, Her Excellency Dr. Kiran Bedi, Madam Sir. Our another guest of honor, Dr. Veena Kalra Ma'am. Our School Honorable Chairman, Shri Ashok Gupta Ji. Our respected School CEO, Mr. Nakul Gupta. My dear students, respected parents, esteemed grandparents, eminent educators, and distinguished ladies and gentlemen. Wishing you all a very prosperous, happy and a healthy 73rd Republic Day. It gives me immense pleasure in addressing you on this occasion of 73rd Republic Day. On this auspicious day, I extend my warm greetings and best wishes to the entire Gyaananda fraternity on behalf of the Gyaananda management. We, the people of India, celebrate this day to commemorate the official adoption of our Constitution. This day, we take the opportunity to salute and recall the untold sacrifices of our national leaders and freedom fighters. Our Constitution envisages fundamental rights and democratic value based on the principles of justice and equality. Our founding fathers visioned the commitment for the people-centric welfare state. On this occasion, we pledge to uphold the ideals enshrined in the Constitution to take up our country to great heights. Friends, behind every successful man there is a woman, and behind every successful woman is she herself and then her family. A lady who has always broken the glass ceilings way before and made pathways for budding leaders. She gave new definitions to the policing even before given. Power to correct, power to prevent, and power to detect, then just power to punishment. We welcome our Honorable Chief Guest, Dr. Kiran Bedi, the Iron Lady, the most admired, eminent icon of the country, most worthy Indian women, an elite IPS officer, law enforcer, strongest administrator, tennis player, well-renowned author, and social entrepreneur. She still looks so beautiful and young. Madam Sir, we welcome you at Gyaananda School, the School of Joyful Learning. Ladies and gentlemen, leadership means accountability, responsibility, and integrity. Our leader, Dr. Kiran Bedi, was born on 9th June 1949 in Amritsar. She started her formal studies in 1954. She graduated in 1968 with honors in English. She also did the law degree from the University of Delhi in 1988, and she is a PhD from IIT Delhi Department of Social Science in 1993. Dr. Bedi is the first woman in India to join the officer rank of Indian Police Service in 1972, who was the 24th former Lieutenant Governor of Pondicherry. She remained in service for 35 long years before taking a voluntary retirement in 2007 as Director General, Bureau of Police Research and Development. She was the Director General of Narcotics Control Bureau and Civilian Police Advisor in the United Nations peacemaking operations and was rewarded with the UN Medal to her hard work, perseverance and dedication. She was the first woman in uniform to lead all the male contingents of Delhi Police at the Republic Day Parade in 1975. What a splendid moment it was.
Her biopic, Yes, Madam Sir, cherished by all of us. Dr. Bedi was also an author who has done wonderful works like Demand for Swaraj, New Governance Opportunity for India, What Went Wrong, and continues. It always possible, one woman's transformation for the Tihar. Leadership and governments, Indian police, by the change, fighting corruption, dare to do to the new generation, Indian against corruption, creating leadership. The book Fearless Governance, which she just launched on 22nd of January 2022 by another eminent Indian icon, Indira Nooyi ma'am. This book is based on the ground realities of nearly 5 years of service of Dr. Bedi as the Lieutenant Governor of Pondicherry and her vast experience of 40 years in the Indian Police Service. The author demonstrates the right practices of responsible governance. She brought about the team spirit, collaboration, financial prudence, effective policing, bounding in service, and decision making through the fearless leadership. The Fearless Governance is a book to read, see, hear, and feel for good governance and leadership. She was awarded with different kinds of medals. Few of them like the Credit Officer Award, President's Police Medal for Gallantry, Asian Region Award, Raman Magsaysay Award, Line of the Year, the Pride of India, United Nations Medal, Mother Teresa's Memorial National Award for Social Justice, Most Admired Woman of the Country, IIT Delhi Alumni Award, L'Oréal's Paris Femina Women's Award, and so forth, so forth. Ladies and gentlemen, let's welcome Madam Sir, the former Lieutenant Governor of Pondicherry, Her Excellency with a gigantic heart. She is a huge celebrity in India. Madam Sir, we welcome you on board. On this historic occasion, I once again extend my warm wishes to the entire Gyaananda fraternity. Jai Hind! Thank you, Principal Ma'am, for your truly inspiring, wonderful words always. It gives me immense pleasure and a heart filled with gratitude to welcome Dr. Kiran Bedi, Madam Sir, to grace this pious occasion as we celebrate our 73rd Republic Day at Gyaananda School. Ma'am, as India celebrates 75 years of independence, who better than your good self, who is an epitome, an inspiration, a role model for all of us on this very day. On behalf of our Gyaananda family, ma'am, if we start talking about all your works and achievements, days and nights will fall short to illustrate and inculcate in ourselves your hard work and accomplishments. Ma'am, I would like to take this opportunity to briefly talk about how you led by example in your recent job as the Lieutenant Governor of Pondicherry. Just as you have always done, simply excelled and shown everybody how development can change the face of a union territory like Pondicherry, ma'am. To talk briefly about the few achievements, first of all, when you started the office, the tea mantra that you floated for the office bearers, this really inspired them to work towards the prosperity of Pondicherry, making Raj Nivas the people's Nivas. This helped people to directly connect with you, whereby you could really understand the issues that they are facing at the grassroots level. You went on foot, on cycle, even used public transport and made sure that no stone is unturned in understanding the issues and resolving them. You addressed each and every person equally. Ma'am, the cycle rallies that you conducted not only made waves all across Pondicherry, but also throughout the nation.
Talking about Pondicherry, how can we not mention the Water Rich Pondicherry, a program that was game changer in the development of Pondicherry, ma'am? Ma'am, in this program, this again was a huge success in the development of Pondicherry and which eventually led to being emulated across the nation. Ma'am, in my closing remarks, I would like to say a person like you who's so dynamic, development oriented, diverse, diligent, and a definitive person is an inspiration for our generations and for the generations to come. Finally, I would like to call our respected Honorable Chairman, sir, to come and say a few words. गणतंत्र दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं. It's my proud privilege to welcome Dr. Kiran Bedi ji to our school, Gyaananda School. She is a true Karma Yogi, a diamond not only for India, for the whole world. In all her actions, nation comes first. For her, Kartavya is foremost. It is these qualities which moved her to launch a virtual platform, demonstrative learning, on the eve of her birthday, 9th June. This platform shares her rich experience of her 4 decades of hard work. She has also founded 2 NGOs, Navjyoti India Foundation and India Vision Foundation. All her actions are aimed to demonstrate and inculcate high values and good governance for a blissful society. Wherever she has worked, she has left her deep mark. At this stage, we at Gyaananda School, students, educators and parents take a pledge to use this virtual platform, demonstrative learning, to follow her initiative. At this stage, I also take the opportunity to welcome Dr. Veena Kalraji, who is known as Mother of Pediatrics Neurology in India. She is not only a doctor, she is a magician. She has a great healing touch. I in my life have seen children and patients getting cured by her blessings more than medicine. It's my proud privilege that she is also here with us today. I thank you both, Dr. Kiran Bedi ji and Dr. Veena Kalraji. Jai Hind. Are you asking me to speak? मैं सबसे पहले अपनी बहन और जिनकी मैं बहुत प्यार और इज्जत करती हूँ, डॉक्टर वीना कालरा, ये उनकी वजह से मुझे आपके स्कूल में आने का मुझे मौका मिला, ज्ञानंदा स्कूल. ये मुझे वीना ने बुलाया था कि किरण तुमको ज्ञानंदा स्कूल में जरूर आना है. वीना मेरी बहुत प्यारी बहन है, इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसका मैं देनिया नहीं हूँ. जब मैं यूनिफॉर्म में काम करती थी और मेरी बेटी को इलाज की जरूरत होती थी, यहाँ तक कि बायोप्सी इसी ने करवाई थी. मैं काम कर रही थी, एक डकैती हुई थी और मैं डकैती में गई हुई थी डिकोइटी में, और वीना मेरी बेटी को लेके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में उसने बायोप्सी कराई थी. मैं कभी नहीं भूल सकती जो वीना ने मेरे लिए किया. और उसके बाद भी वीना मेरी बहन और एक डॉक्टर के रूप में मेरे जीवन में रही. इसलिए आज वीना ने मुझे बुलाया, मैं उसकी बहुत आभारी हूँ. वीना इज ट्रू अ हीलर, अ वेरी स्ट्रॉन्ग पेडियाट्रिक nephrologist. In fact, she's a pediatric ही नहीं है, she's a very brilliant nephrologist. मैं यही कहूँगी कि भगवान, मैंने ये देखा कि मैं वीना सकती थी क्योंकि मैं इतनी लायक नहीं थी कि डॉक्टर बन सकूं, लेकिन वीना पुलिस ऑफिसर जरूर बन सकती थी.
अब मैंने कहा क्योंकि पुलिस बनना आसान है लेकिन डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं आपका कदर करती हूँ, आपकी कदर करती हूँ कि आपने मुझे वीना के साथ मिलके बुलाया। वीना, थैंक यू सो मच। ईश्वर करे आप यही तरक्की करते रहें, आपके पास जो पेशेंट आए उसकी उसको इलाज और तंदुरुस्ती मिलती ही रहे, मेरी यही प्रार्थना है। मेरा ग्रेटिट्यूड हमेशा आपके साथ है। मैं अशोक गुप्ता जी, जो मैं समझती हूँ वीना के भाई हैं शायद, मैं पूछती रही हूँ कि अशोक गुप्ता जी क्या हैं, तो शी सेज माय ब्रदर। आई डू बिलीव इज योर ब्रदर बिकॉज कालरा नहीं लगा, आगे गुप्ता लगा है, सो आई ट्रस्ट दैट ही इज more than your brother. Ashok Gupta ji, you're the chairman of the Gyaananda school. आप तो बहुत नेक इंसान है, आपने मुझे इतना कुछ मेरे बारे में बोला। आपका बहुत धन्यवाद। किस प्रेम से, प्यार से, श्रद्धा से आपने अपना स्कूल खोला है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब ये कोविड वगैरह हट जाएगा, हमें मौका मिलेगा आपके स्कूल में आने का और आपके बच्चों को मिलने का और बच्चों के साथ बातचीत करने का। तो मैं आपकी बहुत आभारी हूँ गुप्ता जी, अशोक जी, आपने मुझे ये मौका दिया, चाहे वर्चुअली दिया, लेकिन पहले प्लान यही था। ये ओमिक्रॉन आ गया, नहीं तो मैं आपके बीच में आके फ्लैग होइस्टिंग जरूर करती, लेकिन आपने मुझे नेशनल एंथम आज गवा दिया। मैंने आई कुड सिंग इट। आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे लिए रिपब्लिक डे मनाया गया। Nakul Gupta ji, I'm sure you're the son of Mr. Ashok Gupta. If son or a brother, you look so young. But the CEO, I'm sure we will meet in the school one day when things are normal. And you मैंने आपको इतना बड़ा, दीपिका, आपने मेरी इतनी बड़ी बायोडेटा दी। मैंने इतनी बड़ी बायोडेटा आपको नहीं भेजी थी, आपने अपने आप ये रिसर्च करके इतनी बड़ी बायोडेटा बना दी। आई वांट टू थैंक यू द प्रिंसिपल। आपने मुझे शॉर्ट बायो भेजी, मैंने शॉर्ट बायो भेजी, आपने तो मेरी सारी पीएचडी पढ़ दी। आपने खुद ही एज अ प्रिंसिपल रिसर्च करी एंड यू रेड माय बायोडेटा, बट थैंक यू सो मच। मैं यहाँ से काश आपको कह सकती अब काफी हो गया, प्लीज लेट्स गो बैक एंड डू समथिंग एल्स, लेकिन आप मेरी बायोडेटा को पढ़ते ही गए। मैं और सारे फैकल्टी मेंबर्स और मेरे प्यारे बच्चों और पेरेंट्स जो हमको सुन रहे हैं, और आज मिलके हम लोग अपना 73rd रिपब्लिक डे मना रहे हैं। मैं ये कहूंगी बच्चों को कि कोई मिस ना करे इस बारी का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। टेलीविजन पे पूरा वॉच करना, क्योंकि इस बारी ज्यादा कुछ नॉवेल्टीज हैं। 10:30 बजे शुरू होगा, डोंट मिस दिस। एक एक चीज पढ़ना, और आज प्रेसिडेंट साहब की स्पीच भी सुनना। यू मस्ट लिसन टू द प्रेसिडेंट स्पीच ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे, नंबर 1। नंबर 2, परेड मिस नहीं करनी। इमेजिन एज इफ यू वर आल्सो एज अ पार्ट ऑफ द ऑडियंस। इसलिए परेड को भी अच्छी तरह देखना, बिकॉज इट्स अ मॉडर्निटी विद कल्चर, so you will see a lot of modern with heritage and culture, and of course it's a great joy and fervor watching the parade. So parade ना कोई बच्चा पेरेंट मिस ना करे, मुझे आपको ये रिक्वेस्ट करनी है। आपने रिपब्लिक डे बारे में, आपने डेमोक्रेसी के बारे में बताया। हमारे बच्चों ने अपने गीत से, अपनी एंटरटेनमेंट से और अपनी प्ले से आपने डेमोक्रेसी के बारे में बताया। और एक चीज पर मैंने देखा आप जोर देते रहे, वो है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आप बार बार देते रहे। बच्चों, मेरी जिंदगी में यही हुआ है। आई हैड अ राइट, आई गॉट अ राइट टू जॉइन द इंडियन पुलिस सर्विस। आई हैड द राइट फॉर एजुकेशन। आई हैड द राइट फॉर गुड अपब्रिंगिंग फ्रॉम माय पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को लायक बनाएं। ये बच्चों, माँ बाप का कर्तव्य है कि अगर आपने एक बच्चे को जन्म दिया लाइफ में, तो अब आपका कर्तव्य है कि उसको सब कुछ दे जो उसका जीवन पूरा निर्माण हो सके। यू गिव एवरीथिंग टू द चाइल्ड यू हैव ब्रॉट इनटू दिस लाइफ। सिमिलरली स्कूल का भी कर्तव्य यही होता है कि हम अपने बच्चे को सब कुछ वो दें जिसमें बच्चा 100% लायक बने और कहे कि मेरा स्कूल महान, मेरे स्कूल ने मुझे सब कुछ दिया। जैसे कि मैं अपने, आज भी जब भी मेरा कोई इंटरव्यू होता है तो मैं यही कहती हूँ, आज भी जो भी मैं हूँ, मैं अपने माँ बाप की वजह से, क्योंकि मेरी माँ और मम्मी और डैडी ने, जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए अनथक प्रयास किया, अनथक कर्तव्य निभाया अपनी ओर से। यहाँ तक कि मैं काम भी जब करने लगी, 24 घंटे का काम करने लगी, मीना जानती है
किस तरीके से मेरी मम्मी ने भी मेरे काम को, घर को संभाला, ताकि मैं काम करती रहूं और थक के जब आऊं तो फिर से तैयार हो जाऊं अगले दिन के लिए काम करने के लिए, और घर की कोई चिंता नहीं करूं। यहाँ तक कि मेरी बेटी को भी उन्होंने ही संभाला। मेरी बेटी को from the age of 3 till the age of 14, she was totally out, literally out, in and out of school, because every time she was needing help, it was my mother for those 11 years जो उन्होंने सारा संभाला। मैं वो 11 years अपनी इंडियन पुलिस सर्विस को, किसी को नहीं पता चला कि मेरी बेटी की तबीयत नहीं ठीक है और मैं अपना काम 20-20 घंटे बाहर निकाल सकी। ये मेरे माँ बाप ने कर्तव्य अपना निभाया, लेकिन कर्तव्य से भी ऊपर उठ के करा। इसी प्रकार स्कूल ने जो मुझे वैल्यू एजुकेशन दी, मेरी अमृतसर के सेक्रेड हार्ट स्कूल ने, वो भी मैं नहीं भूल सकती। उन्होंने मुझे पंक्चुअलिटी सिखाई, पोलाइटनेस सिखाई, रीडिंग हैबिट सिखाई, उन्होंने क्लेanलीनेस सिखाई, उन्होंने गुड मैनर्स सिखाई, ये सारी चीजें उन्होंने, शेयरिंग सिखाई। दिस वाज कमिंग फ्रॉम द स्कूल। सो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे ज्ञानंद स्कूल के बच्चे को माँ बाप भी ऐसे मिल रहे हैं जो अपना ऐसे कर्तव्य निभा रहे हैं, स्कूल भी ऐसा मिला है जो उनको पूरा उनका निर्माण करता जा रहा है। तो मुझे ये जो आज का रिपब्लिक डे हम मना रहे हैं, क्योंकि मेरे बच्चों ने कर्तव्य और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स हम पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं, बट वी डोंट रीड द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जहाँ ड्यूटीज लिखी हुई, है। मैं समझती हूँ हम अपनी पढ़ाई पहले ड्यूटीज से शुरू करें, फिर जब राइट्स, फंडामेंटल राइट्स पे आए तो हमें उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस पता चलेगी बनिस्बत के वी स्टार्ट विद द फंडामेंटल राइट्स and stop there, almost stop there. But I think the first thing should be the duties as laid down in our Indian constitution. जब हर व्यक्ति अपनी ड्यूटी को समझने लगे, चाहे वो पेरेंट है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो पब्लिक सर्वेंट है, चाहे वो पब्लिक लीडर है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में है, किसी भी व्यवसाय में है, वो कहीं पर भी नए भी व्यवसाय में है, तो भी उसका कर्तव्य बनता है कि अपनी तंदुरुस्ती और अपनी क्षमता को बढ़ाए, ताकि वो अपने देश के और अपने आप को संभाल सके। उसका भी कर्तव्य बनता है, और दूसरों का कर्तव्य बनता है कि उसकी मदद करे ताकि वो कुछ सीख सके। आज आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लर्निंग आ गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मुझे पूरा विश्वास है कि ये अपना स्कूल जो है ज्ञानंदा, ये इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को स्किल्स डेवलपमेंट में खूब बदलेगा, और हर बच्चे को ऐसी स्किल देके पास कराएगा 12th स्टैंडर्ड में कि वह उसकी हॉबी भी हो, लेकिन उसका हो सका स्टार्टअप हो जाए, उसकी ग्रुपिंग बन जाए और वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ चले जाए। अगर उसे डॉक्टर बनना है, साथ साथ और भी सीखे। डॉक्टर बन गया, वेरी गुड, नहीं पर मान लो किसी पार्क के से डॉक्टर से लिया तो उसको सेकंड प्रोफेशन है उसके पास, उसकी साथ है, उसकी संगत है, उसके फ्रेंड्स हैं जो मिल के अपना काम कर सकते हैं और दूसरों को काम दे सकते हैं। तो वी शुड गो इन फॉर ह्यूज अमाउंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ लर्निंग, अप्रेंटिसशिप। इन द एंड ये कहूंगी, 3 मैसेजेस देके जा कहूंगी। एक, भगवान ने सबको माइंड दिया है, रिमेन माइंडफुल। भगवान ने माइंड दिया है, माइंडफुल रहना। माइंड दिया है, लेकिन माइंडफुल रहना बहुत जरूरी है। माइंड दिया मीन सोच, लेकिन सोच के ऊपर सुचेत रहना, सोच के ऊपर सुचेत रहना। क्या मैं अपना समय का सदुपयोग कर रहा हूं? क्या मैं अपने माँ बाप की कदर कर रहा हूं? क्या मैं वैल्यूज ले रहा हूं? सो माइंडफुल मीन्स बीइंग अलर्ट ऑन योर माइंड। भगवान ने हमें माइंड दिया है, विच इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द माइंड। सो रिमेन माइंडफुल मीन्स मैं समय, मैं पढ़ाई, मैं इस वक्त जो बच्चों की कर्तव्य है उसको निभाओ। मैंने अपने जीवन में ये देखा है, जिस एज में जो आपका कर्तव्य है वह निभाओ जब, तो सब कुछ सफल होता है। जब आपका स्टूडेंट लाइफ है तो आपका स्टूडेंट पढ़ना, सीखना, खेलना और अच्छे वैल्यू सीखना, ये आपका कर्तव्य है। दूसरा है, भगवान ने हमको हार्ट दिया है, इट्स कॉल्ड द हार्ट। नाउ यू हैव अ हार्ट which gives us beats for us, but remain heartful. Heartful means, when you're remaining heartful, means you are grateful, you're compassionate, you're empathetic, you care of love, you have a sense of giving, because ये emotions heart के साथ जुड़ते हैं, rationality mind के साथ जुड़ती है to remain mindful। लेकिन जो emotional of giving, caring, respectful, honesty,
कैरेक्टर बिल्डिंग, ये सारे इमोशनल डिसिप्लिन से आते हैं. दैट कम्स रिमेन हार्टफुल. हार्टफुल. अब देखो कोविड में कई लोगों ने किससे कैसे निकल के सेवाएं की लोगों को बचाने के लिए. दे वर हार्टफुल. वी ऑल हैड अ हार्ट, बट दोज पीपल हु वेंट आउट ऑफ द वे टू हेल्प अदर्स, दे वर हार्टफुल. आपने बड़े होके हार्टफुल बनना है. सो एक माइंडफुल रहना है, फिर आपने हार्टफुल बनना है. और थर्ड चीज है हैंड्स के का इस्तेमाल करना सीखना है. द 3 H. ऐसे अपने काबिलियत अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में से काम को सीखो. कोई चीज सीखो कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये रिपेयर कर सकता हूं, ये बना सकता हूं, ये ड्रॉ कर सकता हूं, ये स्टिच कर सकता हूं, ये मैं हाथ. सो इट्स हैंड, इट्स द हेड, the heart and the hands. Then your education is complete. And this is exactly what Swamiji Vivekananda also said. जो व्यक्ति अपने हेड और हार्ट और हैंड्स का सही इस्तेमाल करता है, वह 3 गुना अपने जीवन को अच्छी तरह जीता है. 3 गुना, क्योंकि उसने हेड से भी जिया, उसने हार्ट से भी जिया, और उसने हैंड्स के साथ भी जिया. और साथ में जब वो हेड और हार्ट और हैंड और अपनी 5 इंद्रियां, और आपका स्कूल तो आपको इंडियन वैदिक शिक्षा दे रहा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स भी सिखा रहा है. और उस नॉलेज सिस्टम में याद है गीता ने कहा क्या, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि अपनी 5 इंद्रियां, जो तुम्हारे 5 डोरवेज है, द आईज, द ईयर्स, द नोज, द स्मेल, एटसेट्रा. 5 इंद्रियां जो है, इनको अगर तुम अपने वश में रखोगे तो ये 5 घोड़े जो है तुम उसके चालक बने रहोगे. लेकिन अगर 5 इंद्रियों को जो देखता है क्या, सुनता क्या, सूंघता क्या, खाता क्या है, बोलता क्या है, सुनता और चीज, दीज आर योर 5 सेंसेस. अगर 5 सेंसेस को, इंद्रियों को, इन घोड़ों को कंट्रोल रखोगे तो मालिक बने रहोगे, आप चलाओगे. लेकिन ये 4 अगर नहीं संभालोगे तो 5 इंद्रियां हर जगह फैल जाएंगी. लेकिन अगर 5 इंद्रियों को कंट्रोल करोगे, मुट्ठी बन जाओगे. यू विल राइड योर चैरियट, यू विल बी द कृष्ण, यू विल बी द कृष्ण, एंड यू विल बी इन चार्ज. तो मैं ये कहूंगी कि ये आज का मैसेज, रिपब्लिक डे का मैसेज यही है. as a summing up, the heart, the hand, and the hand, the heart, the hand, the head, the heart, and the hands, and your 5 indriya. You be the master. You be the charioteer. You will be the charioteer keeping these horses. और इस उम्र में ये 5 चीजें इस वक्त आपके पास है. तंदुरुस्ती आपके पास है, शिक्षा आपके पास है, माँ बाप आपके पास है, टीचर्स आपके पास है, देश के साधन आपके पास है. आपने वही सोचना है, वही करना है जो देश का निर्माण करे. और देश का निर्माण हर व्यक्ति करता है, हर व्यक्ति करता है. व्यक्ति से जुड़ता है समाज. हर व्यक्ति तंदुरुस्त, देश तंदुरुस्त. हर व्यक्ति बीमार, कोविड बीमार. देखिए कोविड क्या हुआ, हर व्यक्ति बीमार, कोविड आ गया. हर व्यक्ति तंदुरुस्त, कोविड चला गया. सो द पॉइंट इज, हर व्यक्ति ने अपना अपना ध्यान रखना है. वो क्या सोचता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ जाता है, क्या प्रिकॉशन लेता है, कानून की पालना करता है. वो हर व्यक्ति से समाज बनता है. सो अपने आप को ये मत समझो मैं नहीं करूं दूसरा करेगा. नहीं, मैं करूं दूसरा भी करे, लेकिन मुझे पहले. इसको कहते हैं राष्ट्र निर्माण. सो रिपब्लिक डे जब हम मनाते हैं, वो राष्ट्र निर्माण में हमारा क्या योगदान होता है, ये समझने के लिए हम अपने आप को रिमाइंडर देते हैं. So it's a reminder today back to the 73rd Republic Day कि मुझे क्या करना है अपने समाज, अपने देश के लिए. मुझे ये करना है कि मुझे अपना निर्माण करना है. मेरा निर्माण देश का निर्माण. मेरा देश का निर्माण मेरे बिना नहीं हो सकता है. मेरा निर्माण देश का निर्माण, हमारा निर्माण देश का निर्माण. मैं तंदुरुस्त, देश तंदुरुस्त. मैं बीमार, देश बीमार. तो अगर हम ये सोचने लग जाएंगे तो भारत ऐसा आप उसके निर्माता बनेंगे. और आपने जीना है, आपने जीना है. अगले सालों में ये छोटा बच्चे आप हैं, आपने देखना है. टर्न ऑफ द सेंचुरी में यू विल ऑल बी प्रेजेंट. टर्न ऑफ द सेंचुरी यू विल बी, मोस्ट ऑफ यू विल बी प्रेजेंट. व्हाट काइंड ऑफ सेंचुरी डू यू वांट? What kind of years ahead you want? You have to be the architects of your own present, architects of your own future, and architects of a prosperous and a safe India. Jai Hind. Thank you so much, sir and ma'am, for enlightening us with your words. Now, moving forward, as Bernard Baruch very well said,
Millions saw the apple fall, but Newton asked why. So, we have students of Gyaananda school to ask those whys and how and satisfy the curiosity of mind. Over to the students. Please ask your questions one by one. Good afternoon, ma'am. My name is Mariah Jan and I'm from grade 6, and I would like to ask you that what inspired you to take up policing? My growth, my disciplined growth. It was my value system and my very disciplined growth and love to serve the country. All these three things were combining and finally taking me to the destination. So it's if you are a disciplined, you're looking for something disciplined. And I was also fearless. I was also very growing up in a very brave way. And I'm also very keen to serve. So I think all these became a chemistry to bake this cake of Indian police service. So ये चीजें होती हैं जैसे अगर आप कहते हैं मेडल आपको कैसे मिला ओलंपिक मेडल वो बोलेगा मैं चाहता था कि मैं अपने भारत देश का झंडा वहां ओलंपिक्स में लगाऊं या एशियन गेम्स में या कॉमनवेल्थ में तो रोज उठ के पढ़ता था भागता था एक्सरसाइज करता था कोच उसकी हेल्प करते थे सो ये शुरुआत जब आप ऐसी चीज कुछ आप हासिल करना चाहते हैं तो ये छोटी उम्र में आता है उसके लिए माँ बाप और स्कूल आपको आपकी मदद करता है ऐसे ही मेरे जीवन में भी हुआ मेरे डिसिप्लिन में और ये करने में मेरे माँ बाप का और मेरे स्कूल का पूर्ण हाथ है लेकिन मैं बहुत तपस्वी थी मैं कहना मानती थी मुझे जो कहते थे मैं वो करती थी मैं कभी भी एक फालतू अपना टाइम नहीं वेस्ट करती कहीं कोई गॉसिप नहीं करती थी कोई चुगलबाजी नहीं करती खेलती खूब थी हंसती खूब थी फ्रेंड्स बहुत थे लेकिन पढ़ने वक्त पढ़ती थी खेलने वक्त खेलती थी देयर वाज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन माय लाइफ सो व्हेन आई सैट फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन आई रिटन आईपीएस इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस और मुझे पता नहीं था कि इससे पहले इंडियन पुलिस सर्विस में कोई महिला है ही नहीं कोई आई नहीं थी तो मैंने पता किया उन्होंने बोला नहीं हमने आने नहीं दी क्योंकि उन्होंने कभी शायद फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं लिखी थी तो अब मैंने लिखी तो मेरा तो राइट बनता था तो मुझे बुलाया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे केसी पंत थे जब यूनियन होम मिनिस्टर उन्होंने बुलाया कृष्ण चंद्र पंत उन्होंने कहा अब तुम दूसरी सर्विसेज में भी जा सकती हो वी विल नॉट प्रेफर कि वेमेन ना आए अभी भी क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट जॉब है तो मैंने कहा नहीं मैं इसी में आऊंगी ये जब मैंने आईपीएस फर्स्ट प्रेफरेंस लिखी थी तो मैंने सोच समझ के लिखी थी क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ उसमें मुझे नहीं मालूम था देयर वर नो वुमेन अर्लियर सो दिस इज हाउ इट वाज डिटर्मिनेशन टू सर्व माय कंट्री और वो देखो अभी भी डिटर्मिनेशन अभी भी रहती है चाहे कुछ भी हो जाए सर्विस ऑफ द नेशन यही तरीके से मैंने काम अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर पुडुचेरी का किया डिटर्मिनेशन से किया ईमानदारी से किया मेहनत से किया लगन से किया और निडर होके किया सो ये आपकी जब ये नींव बन जाती है तो आईपीएस ही क्या कुछ भी पॉसिबल है आप अच्छे डॉक्टर ऐसे ही बन सकते हैं जैसे वीना कालरा बनी मैं आईपीएस बनी क्योंकि मेरी ये रुझान थी सो हर एक का अपना रुझान होता है जरूरतें वही है डिसिप्लिन भी है हार्डवर्क भी है फोकस्ड अटेंशन भी है सपोर्ट सिस्टम भी है I can't hear you. Jaslyn, I can't hear you. Huh. No, not still. Your sound. Check your sound. Now, speak. I'm not hearing you. Jaslyn, I'm not able to hear you, Jaslyn Sharma. Okay, Azin, you try. Azin, you speak. No, I'm not hearing you still. I'm not hearing you. The problem is from your side. There's some glitch that side. My technology tech is saying that there's something wrong that side. Now speak. Bolo.
नहीं, not hearing you. I'm unable to hear you. Azin, I'm still not hearing you. Now, speak, Jasmine. Speak. No, I'm not still hearing you. Check your something is missing. Now speak. Now speak. I can hear you now. Speak. No, I'm still not hearing you. Heard some sounds, but don't hear your voice. Something gone, some slip up, some glitch. Damish, try speak. Speak, Yeah, Damish. ma'am, can you hear me? I can hear you. Yes. Go ahead. Good afternoon, ma'am. I am Damish Kumar of Grade 6 Gyaananda School, and my question to you is what change do you want to see in the new generation? Bete, the change I would like to see, they must love India passionately. They must love their country. They must respect the country. They must know the history, the civilization of India, which you people do not know. You see, our parents knew, but I think later on generations lost out on this generation. So please read it a part of your discussion of the heritage. We have a very strong spiritual heritage. Do you know many of those things which are in the spiritual heritage are part of the modern books of ethics in a different language? And if possible, learn Sanskrit. If you can learn Sanskrit as a hobby class, it'll be very good for you to go to the source of all knowledge. So Sanskrit is one language. I think it'll be very good if you can learn as a optional subject or otherwise, because you can go to the source, right? Ma'am, may And I number add two, something? carry on, Ma'am, may I add something? Ma'am, we actually please. learn Sanskrit. So, I'm so happy. How wonderful. Then you can read the Vedas, the Upanishads yourself. How what yes. you can learn this. If you are learning Sanskrit, then there could be one class where you read those shlokas yourself and you will know the meaning. We will not look at English translation. I would want character, spiritual character. If this once the spiritual character of India comes about, India will be a very spiritual power. We will also be developed power because the spiritual growth means honesty of purpose. हर आदमी मेहनत करेगा, वो कर्तव्य की ओर जाएगा. तो spiritual growth, spirituality does not only mean a only blind chanting. No, it becomes truthful living. So जब truthful living होती है nation, so India can be a spiritual power if every youth today is proud of its heritage and understands the source of its knowledge power. Today the knowledge power, not only engineering power. You see, the Western world is known by its engineering power. If we combine our spiritual power with engineering, which we have opportunities, India will be the best country in the world in the coming years. While you're still around, you will see it in your own adulthood. And as you become in your 30s and 40s, as you become leaders, you will see it happen. Yes. Thank you, ma'am, for your answer. Thank you, Damish. You're welcome, ma'am. Yes, Good Azim? afternoon, ma'am. Good afternoon, Yes, ma'am. Azim. I am Azim Khurana of Grade 8 Gyaananda School. So my question to you is that what is your idea of women empowerment? And as a woman, what hurdles you faced to reach where you are today? Bete, are we talking of boys' empowerment? Women empowerment. Yes, but do Yes. we talk about boys' empowerment? No, No. we don't. Why? Why? Why don't we talk about boys' empowerment? Why do we talk about women empowerment? Why? The reason is that's also part of our cultural change. It's not that women were being looked down upon in our history. No, in between a period of history in India, unfortunately came
where women had to withdraw indoor and develop a parda to hide themselves from the marauders of history came, who wanted to snatch women away because our women were very beautiful. But prior to the marauders, our Vedic literature is actually putting women at par. But in Yes. between, when that large section of history came and marauders came who only wanted remember the film, Yes. that film, it's Padmavat. true. Yes, Yes. that is an indicator. Why were women withdrawn? Women were withdrawn because marauders came who wanted to take the women. And that's why every woman withdrew to protect herself from invaders and marauders. So that is and that is unfortunately a girl became a liability for protection. Parents were protecting her, afraid कि इसको कोई देखना है. That became part of habitual culture. Yes. Why we don't talk of man empowerment? Because man is physically stronger also. He's the warrior. Man has been the warrior. By nature, man has been the warrior. Mahabharat, there were no women fighting. Yes. Women became the cause. Women became a cause of the Mahabharata. But women didn't fight. Women are not by nature warriors. But they are becoming warriors today when they join the armed forces now. It's changing. So when we talk of women empowerment starts with girl empowerment. When the girl is equally educated, girl is equally qualified, girl has given equal opportunities, and there is no expectation that when the woman goes, the girl is married, she has to abandon her own identity, or that she's dependent on others and she needs to be given something in return to be looked after. Now once these things decline, there is no difference between the girl and the boy. It's all in the mind. Mine. In the mind of the mother and the father, and in the mind of parents of the boys also. It's in the mind of the parents of the boy. Girl and boy are no different in opportunities. Equal opportunity. Today this country is given actually extra opportunities for the girl child. Girl scholarship, girl schooling, girl scholarship. I think it's amazing the mind of the kind of support systems which have been developing. Girl fixed deposit. So when a girl is born, ये उसका जब 21 साल की होगी, पढ़ाई करना चाहती है, उसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट होगी. So look at the opportunities to cover up that gap. So the girl empowerment begins from home. The girl empowerment begins from every home. Every home is a community, is a part of a village. It becomes a state. States become nation. Every girl is a part of a home. When it happens, there is no need for girl empowerment. Then it will be called human development. It will become Yes. equal development. Yeah. Thank you so much, ma'am, for your kind words. Thank you. Thank you, Azim. Good morning, Yes, ma'am. My Kamakshi. name is Kamakshi Kumar. I am from grade 9 of Gyaananda School. It's a pleasure to meet you. My question is what inspired you to create such an inspirational platform of demonstrative learning? Yes, better it was required because I do not know. I probably instinctively before COVID, I called up my foundations, both Navjyoti and India Vision Foundation, and asked them, "Can you hear me? Can you hear me? Yes, yes, yes. Can you?" Well, it was. I think I was looking ahead. I don't know. I have an instinct sometimes of looking ahead. Something in me told me that we need a platform where we can learn lessons, where we can exchange practices, where we can do some grooming, we can do some practical training. So demonstrative learning, that's why the name came demonstrative learning. And at that time when I was Lieutenant Governor Puducherry, I knew I would write my book. And when I wrote my book, and I now wanted to share, how do I share my book? How do I teach you lessons of my book? See, so I called it demonstrative learning. I did not know COVID will come and webinar would become the law, but become the rule. But Yes, at the time when demonstrative learning was founded, COVID was nowhere. So, but it was to yes. demonstrate learning. So that's why it's called demonstrative learning. And we hold some very good programs every Friday, 5 p.m.
I reach out to children from Yes. the Google form, and we do book reading. But now I'm starting another program of book reading with youth, which is now from the age of 18 to 22, to teach them fearless leadership, grooming leadership. So now we'll do one Friday for children up to the age of 16, 14 to 16. But from another alternative Friday, book reading will be from for the age group of 18 to 22, grooming leadership. If we can groom fearless leadership, they join the UPSC, they become professionals, they will remain strong and courageous and be able to be ethical and firm in their convictions. So we're going to do that. So demonstrative That's learning will demonstrate the lessons learned through the Fearless Governance book. So it will be one chapter a time every time we will read, and those children who will be identified will be sent a copy of the soft copy of the book so that they can read and they can ask. So it will become an interactive session of demonstrative learning. We are planning to do that now. yeah, that is very interesting, ma'am. Thank you. Thank you. Wow, that was really a brainstorming and inspiring questionnaire session with Dr. Kiran Bedi. Moving on ahead, जिसका ना कोई मेल नृत्य है ऐसी करा। चलिए अब हम इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति नृत्य का आनंद लेते हैं, जिसमें हमारे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं अपने नृत्य से आप सभी का मन मोह लेंगे। वन्दे मातरं 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 वन्दे मातरं 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 सुजला सुफला मलयज शीतला सुजलं सुफलं मलयज शीतलम् सस्यश्यामला मातरं वन्दे मातरं मातरं मातरम् ज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभासिनी सुहासिनी सुमधुरभासिनी सुमधुरभासिनी सुखदां वरदां सुखदां वरदां सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं मातरं मातरं। Dance is the hidden language of the soul, and our little ones have proved it indeed. Let's have a big round of applause for them. बहुत खूब, क्या सुंदर नृत्य था। Hello everyone, my name is Sri. I'm in KGA from Gyaananda school. Today I feel great. I got chance to express my gratitude towards nation. Our country is our motherland
and we should always be grateful for whatever we have got from our country. We should participate and put positive efforts into growth and development of our nation. I would like to thank God for giving me this great nation, India, as my motherland. Jai Hind! Greetings to everyone present here. As rightly said, mother and motherland are greater than heaven. Just like kids love their mother, we should love our mother India. We should be thankful to our soldiers protecting our country. We should be thankful to doctors protecting our countrymen. We should be thankful to teachers giving us knowledge. On this special day, let's wish a peace, prosperity, progress for our country. Jai Hind! Good morning, everyone. My name is Tisha Puri. I study in KG class. Today I'm going to tell you how children and me can take care of our country, India. We children are the future of our country. Firstly, we should take care of our environment by throwing garbage in the bin, by not bursting crackers. We should grow more trees. We should not use plastic. Secondly, we should treat everyone equally with respect. Acts of kindness, generosity, loyalty and honesty can make a big difference. Thank you. Finally, we have come to an end of our event, and now I request everyone to please stand up for Gyaananda School Anthem. Gyaananda School Anthem was very well written by Miss Neelam Narwal and melodiously sung by our Gyaananda students. अडिग रहे, निर्भीक बने हम, ज्ञानंदा के बच्चे हम सब, हमें नया युग लाना है, छुएगा शान से, इस जीवन की हर मुश्किल में एक नया इतिहास रचे हम, हमें जीत कराना है, तन मन धन और प्राण से, ज्ञानंदा के बच्चे हम सब झूमेगा शान से, एक नया इतिहास रचे हम तन मन धन और प्राण से, सूरज की किरणों के संग हम हर्षित मन से आते हैं, विषय ज्ञान की सरिता से हम प्रेरित होकर जाते हैं, अडिग रहे निर्भीक बने हम, हमें नया युग लाना है, इस जीवन की हर मुश्किल से हमें जीत कर आना है, ज्ञानंदा के बच्चे हम सब झूमे गाएं शान से, एक नया इतिहास रचे हम तन मन धन और प्राण से। गुरुग्राम की पावन धरा पर विद्या का नंदन वन है, गुरु शिष्य का ये बंधन हमको चलना संग संग है, तिरंगे पर चढ़ जाना है, तिरंगे को फहराना है, विद्या का यह पावन मंदिर जिस पर शीश झुकाना है, ज्ञानंदा के बच्चे हम सब झूमे गाएं शान से, एक नया इतिहास रचे हम तन मन धन और प्राण से, ज्ञानंदा के बच्चे हम सब झूमे गाएं शान से, एक नया इतिहास रचे हम तन मन धन और प्राण से। हर मुंडेर पर देश की अमन की चिड़िया चह जाए, हर बेटी मेरे देश की खुशियों के गीत गाए, मानवता की लौ जले हर दिल में, किसी को किसी का न डर रहे, दुआ है बस यही मेरी,
मेरा हिंदुस्तान अमर रहे, मेरा हिंदुस्तान अमर रहे. Constitution declares that India is a sovereign, socialist, secular and democratic republic. It assures its citizens justice, equality, liberty and fraternity. It also gives us our rights and duties as citizens. On this Republic Day, I hope that no matter who we are, rich or poor, a powerful politician or a regular citizen, we continue to respect these basic principles and values given to us by our amazing Constitution, so that as we move forward and continue to build our nation, we do not leave behind the foundation on which our country is built. I want to end this event by saying that India is a democratic country. The citizens living in a democratic country enjoy the privilege to elect their leaders and to lead the country. Although we have seen a lot of economic improvements and success as a society, we will still have many challenges in our paths, such as poverty, unemployment, pollution, and the last 2 years, COVID. It is our duty as citizens to face these challenges and come out stronger on the other side. As we celebrated the anniversary of our Republic, I thank our chief guest, Dr. Kiran Bedi, our distinguished guest, Dr. Veena Kalra, Chairman, Shri Ashok Gupta, CEO, Mr. Nakul Gupta, and our head of the school, Dr. Deepika Rathi. Fellow citizens, dear parents, and most loved students. Our appreciation for our farmers who sustained agricultural production, scientists, administrators, the soldiers in India's frontiers, and frontline workers from whom we all are family. So, one thing we all can do is to promise each other that we will become a better version of ourselves so that we could contribute to solving all these problems and making our nation a better place. Let's be enterprising and talented fellow students to become responsible youth of tomorrow and contribute to shaping a self-reliant India. India has changed a lot since being declared as a republic and will continue to change. May India prosper. Thank you. Jai Hind, Vande Mataram.